गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, प्रणाम एंड जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल हमस वॉर के बारे में एंड व्हाट लाइज अहेड। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आइक सिंगा। राइट, General Singha is the ex-head of mission and force commander of UNDOF. What is UNDOF? It's an UN authority for disengagement observation force in Golan Heights, right? Which is meant to oversee the whole disengagement process there. And most importantly, being the head of the mission, he had a political role also. And he was there for 3 years. And in 3 years, he knows the ground situation better than most of us. In fact, better than many of us put together, right? A man on ground who's seen this entire area from Lebanon down to the southern tip of Israel is here with us. More importantly, and very importantly, we are cosmates. And we are cosmates from the National Defense Academy, right? We've grown up together and we've retired from the army almost together. Okay. And we could have no one better than him to talk to us about Lebanon. Uh, Good evening, Ike. Welcome. And it's a pleasure to have you on the show. Good evening, Shankar, and it's a great honor. Thank you for getting me on the show. And good evening, namaskar, viewers. आपके साथ interact करने में बहुत मजा आएगा, I'm sure. Yeah. Before we get into Lebanon and Hamas and Israel, I must tell you, General Singha is also an actor. He's acted in a movie, Avrod, and his son is an actor, and both his sons are actors, and his wife is a terrific poet. How do I know she's a poet? Because the book she wrote, I had the honor of attending her ceremony, launch ceremony. Right? It's a great, and as a family they are great, and it's an honor to have you over here, Ike. So shall we start the proceedings? Thank you very much, sir. And I must tell people that it's good to have friends at the right places. Okay. Oh, right. Okay. Now, right. Okay. आज हम बात करने वाले हैं Israel Hamas war. That's why now that I've introduced General Singha to you in the right manner, now you understand the import of this talk. But इससे पहले हमने 4 वीडियो किया है on the Israel-Palestine conflict. Initial assessment लिया, उसके बाद जनरल शौकीन चौहान के साथ we went over the thing because he's also served there. Then I did a thing on Agniveers and women in combat, and yesterday we discussed about what issues we can learn from this war. 5 main issues which I spoke with General Satish Dua, and today we are doing this. And tomorrow, not tomorrow, on 15th, Sunday evening, we're going to do Israel-Hamas war, India-specific issues with General Atta Hasnain. So it's going to be a series because, in my way of thinking, this war and this entire area is of importance, terrific importance to all of us for one main reason. In the last century, when the Britishers decolonized and the World War ended, they left the world with 2 major problems. One is the India-Pakistan problem, and second is this problem. And these are very complicated problems. Whatever comes out of this problems, whatever it is, we have a lot of similarities. And understanding this has a huge issue, or rather a similarity to what we're going to do when we deal with Pakistan. Okay, having said that, I would like you to subscribe to Gunner Shot. आप सब्सक्राइब कीजिए और ये पूरा कवरेज जो मैं जारी रखूंगा till the whole thing quietens down. You'll get notification if you press the bell icon. But ये है political map of Israel. On the east is Egypt. On the east is Jordan in the pink color. West is Egypt. To the south is Saudi Arabia. Saudi Arabia doesn't have a contiguous border. इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है इसराइल के साथ. अच्छा, ऊपर आप देखेंगे लेबनान है और थोड़ा इनका साथ सीरिया के साथ भी बॉर्डर है.
चारों तरफ ये घिरे हुए हैं और तकरीबन ये अरब वर्ल्ड के साथ घिरे हुए हैं, जिनके साथ इनका 67 में लड़ाई हो गया, 48 में भी लड़ाई हो गया, और यम किपुर वॉर 71 में भी हुआ और बाद में भी हुआ है। और बीचों बीच अगर आप देखेंगे, इसराइल के जो पीला कलर है उसके अंदर एक दो ग्रे बिंदु हैं, वो है वेस्ट बैंक जो दिखाया है, और गाजा पट्टी। ओके, जो गाजा पट्टी है, ये है गाजा पट्टी, हम सब सुन रहे हैं, सब वी आर अप टू स्पीड ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। आप देखिए गाजा पट्टी, मैं जस्ट दोहराऊंगा, इट्स 41 किलोमीटर्स नॉर्थ साउथ, 6 to 10 kilometers east west, narrow, and highly populated. It is supposed to be the most densely populated part of the earth. And just to give you an idea of this, ये जो रेड बॉक्स के अंदर है, इसको मैं दिखाऊंगा सैटेलाइट फोटोग्राफ। आप देखिए, बाएं है गाजा, और गाजा सिटी का एक दृश्य कितना घना है, हाउ डेंसली इट इज, एंड इज फुल ऑफ बिल्ट अप एरिया। एंड ऑन द राइट इज इजराइल, and you can see the fencing very clearly. Okay, and today what we're going to cover generally is this intensity and scope of the Hamas attack, Israeli intelligence capability, the wartime unity government which has come into being, the likely phases of the Israeli counteroffensive, what are the options Israel has. We'll go over it one by one, and then of course the involvement of regional and extra regional powers, right? With this, we'll start with the intensity and scope of the Hamas attack. Over to you, Ike. Just take it on. And let me know Thank whenever you you. want a map, just let me know. I'll get them on. ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गाजा और इसराइल की ये पहली लड़ाई नहीं है, और ये छुटपुट इनके आपस में होती रही है। 2008, 2006 में तो ऑफ कोर्स दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लगा हुआ था लेबनान में, और उसके बाद 2012, 2014, 2021 एकदम कोविड के बाद, 2022 और अब 2023 में। लेकिन ऐसी कभी इंटेंसिटी क्यों हम ये शुरू में डिस्कस करना चाहते हैं, मैं अगर आपको बताऊं कि 1956 जो हमारा मेरे जन्म ईयर भी है, तब साइनाई कैंपेन हुआ था, सुएज कैनाल कैंपेन है, उसमें और 6 डे वॉर में मिलाकर जितनी कैजुअलिटीज हुई थी इसराइल की, उससे ज्यादा ये पहले दिन हो गई थी, पिछले शनिवार को। तो ये देखिए अब दो लड़ाइयों जितनी कैजुअलिटीज, एक में 300 कुछ हुए थे उधर सुएज में, और यहाँ पर 700 कुछ हुए थे। जो योम किपुर वॉर है, जिसमें पूरा टैंक और एयरक्राफ्ट सब कुछ सबने हिस्सा लिया था, उसमें जो कैजुअलिटीज हुई थी वो इस पहले दिन से दुगनी थी। मतलब इतने दिन में 2600 उनके सोल्जर्स की डेथ हुई इसराइल की, और यहाँ पर एक ही दिन में 1200 हो गए। तो इसका मेरे को लगता है कि हमस ने भी शायद ये प्लान नहीं किया होगा कि इतनी कैजुअलिटीज वो लेंगे। जैसे जैसे सक्सेस मिलती रहती है तो मतलब वो मिलिटेंट हो या कोई भी, वो आगे उसको एक्सटेंड करता रहता है। और ये भी है कि जैसे कल की मेरे ख्याल इसमें भी आया था कि एक सोल्जर के लिए एक बार उन्होंने 1000 फिलिस्तीनियन प्रिजनर छोड़े थे। तो अभी अगर इनके पास 100 बंदे हैं तो उनको उनकी सेफ्टी, उनको छुड़ाना, ये सब कुछ इसराइल को सोचना पड़ेगा इससे पहले कि वो ग्राउंड हमला करना चाहें। ऑलरेडी पिछले 5 दिन में इसराइल ने एयर अटैक, सी से और आर्टिलरी गन्स के फायर से 1100 पैलेस्टीनियंस को मार दिया है, और 5800 के करीब इंजर्ड है। तो अभी आने वाले दिनों में कैजुअलिटीज गाजा में तो बढ़ती रहेंगी, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी धीरे धीरे, अभी पहले 2-3-4 दिन तो वो सभी शॉक में थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज वगैरह उठाना शुरू करेंगे। और अगर जमीनी हमला करते हैं इजरायली तो कैजुअलिटीज अटैकर की तरफ भी होंगी। Yeah. So we go to the next point, right? And let's look at the issues of intelligence capabilities.
And what do you feel is the why did it fail, and how much intelligence they have, and what is required if at all the Israelis want to go in? That's that's the crux of this whole story. सो हम लोग सब यही समझते हैं कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है दे आर अबाउट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बेहतरीन है, कंपेयर की जा सकती है जितनी भी टली इंटेलिजेंसीज हैं। उसका एक कारण है, जब इसराइल फॉर्म हुआ था एज ए देश, एक मुल्क बना था, तो लोग दुनिया के हर कोने से आए थे। तो हर भाषा के लोग हैं उनके पास बोलने के लिए, हिंदी बोलने वाले भी हैं और रूसी बोलने वाले भी हैं। तो उनको हर जगह का उनको तंत्र उनको पता है कि यहाँ कैसे कैसे होता है, किस देश में कैसे होता है। और ये वही मोसाद है, ये वही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि जब हम लोग स्कूल के फाइनल ईयर में थे, शंकर और मैं, ओलंपिक्स हुए थे म्यूनिक में, और इनके 12 या 14 एथलीट मेरे ख्याल उनको मार दिया था पैलेस्टीनियंस में। जब आप जाते हो, अभी तो खैर लड़ाई के कारण मेरा ख्याल कम टूरिस्ट जाएंगे, 18,000 इंडियन अभी भी हैं उधर, और हमारी गवर्नमेंट उनको वापस लाने की जो आना चाहता है बंदोबस्त कर रही है। पर जब आप जाएंगे वहां पर, आपको जो टूरिस्ट गाइड है वो सबसे पहले बताएगा कि कैसे दुनिया के हर कोने में जितने किलर्स थे जिन्होंने इनको मारा था, इनके एथलीट्स को, उनको एक एक को चुन के इन्होंने खत्म किया था। तो वो तो उसकी कैपेबिलिटी है। अब जब मैं वहां था, मैं सीरियन बॉर्डर पे था, बट मुझे शौक था इसलिए मैं लेबनान में भी जाता रहता था, गाजा के इधर भी जाते थे, अंदर जाने के बजाय, बट मतलब वहां तक जहां तक अपनी इसराइली फोर्सेस लगी हुई थी बिल्कुल उनके बाहर, एंड पूरी ब्रीफिंग वगैरह सुनते थे हम लोग। तो मेरे को ये बताया गया कि लेबनीज बॉर्डर में और गाजा में कहाँ से बॉम्ब आते हैं, इनको सब उसकी खबर है, कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन से घरों से आते हैं, किस तरीके से वो फायर करते हैं, किस एंगल से फायर करते हैं, कहाँ पर हमस के पोजीशंस हैं, हमस के लीडर्स के घर कहाँ हैं। आपने भी सुना होगा जो हमस का लीडर है उसका भाई और उसके फादर की डेथ हो गई है इन किलिंग्स में। तो इनको सबकी खबर थी, लेकिन मेरा ख्याल जो सिग्नल्स थे, कई बार जो होता है जो आप कहना चाहते हो बिल्कुल ओपन में कह जाते हो और दूसरा बंदा पकड़ता नहीं है। जून जुलाई में कोई मीटिंग हुई थी, वहां पर कन्वे किया गया था कि कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी इजिप्ट भी कह रहा है कि हमने 3 दिन पहले बताया था कुछ बड़ा होने वाला है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू डिनाई कर रहे हैं। तो वो सिग्नल सीरियसली नहीं लिए गए। और एग्जैक्टली 50 साल की शताब्दी योम किपुर वॉर, योम किपुर इनका त्यौहार होता है सबसे बड़ा पूरे साल में, उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी होती है। उसी छुट्टी में वही चुनी है इन्होंने, और टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग्स जो चुनी है उस, एक तो अभी इसराइल मैं देख रहा हूँ पिछले 10-12 साल से, उससे पहले से ही बहुत देशों के साथ दोस्ती करने में जुटा हुआ है, और उन्होंने यही अपनी इमेज की है कि हम टेररिस्ट के कारण हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन कभी कभी खराब हो जाती है। सो टेररिज्म इज ए बाइंडिंग फैक्टर। सब देश कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेररिज्म सब में होती है। तो इसलिए उन्होंने काफी दोस्त बना लिए हैं पिछले कई सालों में। हमारे और भारत के और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, हमारे राजदूत हमने आपस में नहीं एक्सचेंज किए थे। और 1993 में पहली बार हमारी एम्बेसी उधर गई और उनका एम्बेसी यहाँ खुली है। तो सिचुएशन बदली होती जाती है, लेकिन अभी क्या है, यूएई, ये आपने सुना होगा, I2, U2, इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएस के उसमें अम्ब्रेला में हम चारों मतलब देश कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं, कुछ अपनी collective security in the Middle East and the neighboring areas, as also commercial
रिलेशन बढ़ा सकते हैं। हमारा यूएई के साथ बहुत अच्छा चल रहा है और इसराइल के साथ भी चल रहा है। अभी सऊदी अरेबिया भी, जैसे ITU2S शायद हो जाता, तो वो भी नजदीक आ रहा था। तो एक ये टाइम था कि जो बेसिक मुद्दा है अरब इसराइल का, जहां से 1948 से शुरू हुआ काम, वो बैकग्राउंड में जा रहा था और लोग भूल चुके थे कि पैलेस्टीन में क्या प्रॉब्लम है, और अभी एकदम वो दोबारा उभर के आया है। तो इसलिए प्रोबेबली इन्होंने, हमास ने ये टाइमिंग चुनी। राइट। अभी ये जो इंटेलिजेंस जो फेलियर तो हुआ है, what do you think Israel will regather the intelligence if because if they have to go in and carry out ground based ops, right, they will need intelligence. Do you think Israel will be able to develop that kind of intelligence in the time frame in which they're looking at? बिल्कुल। वो शनिवार के झटका लगने के बाद, पहली बात तो मैं बाकी चीजें, एक तो एक और फेलियर था कि इन्होंने टू मच रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी किया। Yeah. मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा yeah, this point had come out earlier also. तो देखो, ह्यूमन इंट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और क्योंकि ये छुट्टियों के दिन थे, मुझे लगता है, मैंने पहले भी देखा है, शायद नफरी भी थोड़ी कम हो पोस्ट वगैरह पे कि चलो ठीक है 10 की बजाय 6 आदमी काम कर सकते हैं एंड वो लंबे आवर्स के लिए काम कर लेंगे। तो ये थोड़ा अदरवाइज आप देखो, इनकी मेन आर्मी है इसराइल की, मैं बताना चाहता हूँ, वैसे सबको पता है, वहाँ कंस्क्रिप्शन है। जो इनकी मेन आर्मी है वो बच्चे हैं 18 साल से 21 साल तक के, 18 साल से 21 साल तक के लड़के और 18 से 20 साल की लड़कियां कंस्क्रिप्शन में आती हैं, और वो इनकी मेन आर्मी है 1 लाख की। बाकी जैसे कुछ बढ़ता है, ऐसे कोई लड़ाई के औजार आते हैं या इमरजेंसी होती है, तो उस समय फिर रिजर्विस्ट को बुलाया जाता है। तो अभी क्योंकि इतनी कैजुअलिटीज होगी पहले दिन, तो इन्होंने 3,60,000 रिजर्विस्ट को भी बुला लिया है, क्योंकि लेबनान की तरफ भी काफी आर्टी फायर एक्सचेंज हो रहा है। आज सुनने में आया कि इन्होंने सीरिया में भी दमस्कस और अलेप्पो को बम्बार्ड किया है इसराइल ने। हो सकता है वो सीरिया को कोई सिग्नल दे रहे हो कि आप इसमें मत पड़िए, बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत उधर से भी कुछ हो रहा हो, वो अभी हमें पता लगेगा आने वाले दिनों में। लेकिन जैसे अभी मैप में देख रहे हैं, इजिप्ट ग्रीन है, सबसे बड़ा दुश्मन था 1973 तक इजिप्ट इसराइल का, और सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे ताकतवर। उसके बाद था सीरिया, फिर थे जॉर्डन और लेबनान एंड ये वो। इन्होंने 79 में इजिप्ट के साथ दोस्ती कर ली, यूएसए ने मदद की, अमेरिका ने, और उसके बाद 93 में इन्होंने ओस्लो ट्रीटी साइन की, जहां पर PLO को वो ओहदा दिया गया कि यही पैलेस्टीनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सही रिप्रेजेंटेटिव। PLO ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। अगले साल 94 में जॉर्डन के साथ ट्रीटी होगी। तो इनको भी इजिप्ट और जॉर्डन से कोई खास खतरा नहीं है। सीरिया के साथ, क्योंकि सीरियन इंटरनल सिचुएशन थोड़ी खराब थी, बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता था जहां पर हम थे, बट फिर भी इनका कोई ऐसी तैयारी आइदर साइड की नहीं थी जहां ये एक दूसरे पे हमले की तैयारी करें। बट लेबनान इसमें घुस सकता है, और पक्का घुसेगा अगर कुछ भी, और नहीं तो पोस्टरिंग करके, थोड़ी बम्बार्डमेंट करके वो इनके कुछ फोर्सेस को नदर्न बॉर्डर पे वो करके रखेगा एंगेज, ताकि गाजा की तरफ कम ट्रुप्स हों। लेकिन ये एसिमेट्रिक वॉर है, ये कोई वो लड़ाई नहीं है जो स्टैंडर्ड लड़ाई हम लड़ते हैं दो देशों के बीच में। एक लोग हैं जो ऑफ कोर्स कैजुअलिटीज उन्होंने 1200 कर दी है, बट उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, आर्टिलरी नहीं है, उनके पास रॉकेट्स हैं, गन्स हैं, और बीच में सिविलियन भी रह रहे हैं। तो ये एसिमेट्रिकल बिल्कुल सिनेरियो है। इसमें आप कितनी फोर्स लगा सकते हो उस पर भी लिमिटेशन है, क्योंकि आपके खुद के 100 अगर प्रिजनर्स वो लेके गए हैं, तो आप उनको
अगर कोलेट्रल डैमेज में हो सकता है उनको भी किसी को कैजुअलिटी हो जाए, और जब सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ेगी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हल्ला करेगी। तो इसलिए ये आसान वो नहीं है, लेकिन वो जो इनका ह्यूमनेंट जिस भी तरीके से इन्होंने, इनके एजेंट्स हैं अंदर, और कुछ ने आपने देखा होगा फौदा सीरियल उस पे नेटफ्लिक्स पे, वो ह्यूमनेंट इनके पास है और वो रीएक्टिवेट इन्होंने कर दी है, तभी 2-4 दिन ये ले रहे हैं। और दूसरे ये 2-4 दिन मैं ये सोच रहा हूँ ये ग्राउंड ऑफेंसिव का पहला फेज था, क्योंकि अभी तक काफी हमस मिलिटेंट्स जो थे वो अभी इजराइल में ही थे और पूरा उसकी उनकी सफाई नहीं हुई थी। तो पहला फेज अभी खत्म होने वाला है, अभी वो सब क्लियर हो गया है, और जो इजरायली साइड का एरिया इसके साथ लगता है गाजा स्ट्रिप के साथ। तो इंटेलिजेंस दे हैव द स्लीपर सेल्स, दे हैव एवरीथिंग गोइंग। सिर्फ ये है कि दे वर लल्ड इनटू कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी छोटा मोटा करेंगे, उसको हम देख लेंगे। आयरन डोम जो कि 96% रॉकेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, भी एक तरह से फेल हो गया, क्योंकि या तो उसको स्विच ऑन करने में टाइम लगा या व्हाटएवर, लेकिन वो ऐसा है कि जब आपके पास 7,000 प्रोजेक्टाइल्स, जनरल शंकर तो आर्टिलरी के हैं, 7,000 प्रोजेक्टाइल आपकी तरफ आएंगे तो कोई भी मशीन जो है वो पूरी तरह से वो भी कामयाब होगी। तो आयरन डोम को भी अभी मतलब उसकी एफिकेसी पे भी डाउट खड़े हो गए। सो इंटेलिजेंस इनके पास है, उसको रीएक्टिवेट कर रहे होंगे, कर दिया होगा इन्होंने अभी, और जब जाएंगे तो मेरे हिसाब से इनको फेज 2 में सिलेक्टेड टारगेट्स पे जाना पड़ेगा, जहां पर हमस लीडरशिप है और जहां पर इनके और स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़ेंगे अपने बंदों को छुड़ाने के लिए। राइट, अभी जो खबर मिला है वो ये है कि they've created a safety belt, evacuated around the Gaza perimeter, and the US Secretary of State Anthony Blinken is in Israel, और बातचीत हो रहा है कि अगला स्टेप क्या लें, और ये प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी तक कोई एंटर नहीं किया गाजा के अंदर, ये प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। सो एक्चुअली जैसे आपने बताया, वी आर सेट फॉर द नेक्स्ट स्टेज, what's going to happen, right? In the sequence of things, what's come out is this thing called the wartime unity government or the national unity government, where Netanyahu and Gantz is the opposition leader, they've come together and they're forming a government. इसका आकार क्या होगा, इसका वैल्यू क्या, what will be the stability of this government? What do you think about this? Because you would have dealt with the politics of this whole place. Yeah, so नेतन्याहू को तो मैं नेशनल डे और यूएस नेशनल डे पे एम्बेसीज वगैरह में मिला हूँ, और उस समय जब जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मिले, वी यूज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड स्पेशली। बट बेनी गैंट्स के साथ मैंने काफी काम किया, ही वाज अ सीरियस। और जब हमको पूरा मिशन सीरिया की तरफ से इधर लाना पड़ा, तो वी हैड अ मीटिंग for 2 days. Over the meeting we came to the conclusion कि कौन सी पोस्ट हमको होल्ड करनी चाहिए अभी भी, माउंट हरमन वाली, पहाड़ों वाली, और नीचे वाली हमने शिफ्ट करके इधर को आ गए थे। सो बेनी गैंट्स, जब मैं साइन ऑफ करके आ रहा था, इससे पहले मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूं, तो उनको पता लगा कि फोर्स कमांडर जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। तो कहते हैं यार वो तो अभी उनका डेट नहीं था। कहते नहीं सर, वो आगे डेट और इज लिविंग टुमारो। कहते बिना मिले कैसे जा सकते हैं। तो मैं क्रिसमस डिनर कर रहा था ऑस्ट्रियन, नॉट ऑस्ट्रियन, ये आयरिश बटालियन के साथ। तो कहते हैं भाई आप आओ हमारे पास और मिलो हमारे को, 8 बजे मीटिंग होगी और उसके बाद डिनर होगा। तो मैंने कहा डिनर तो मैं 5 बजे कर रहा हूँ क्योंकि क्रिसमस वाला डिनर है, और दूसरा मैं अभी यहाँ से बाई रोड आऊंगा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तो हेलीकॉप्टर, मैंने ऐसे मजाक में बोले हेलीकॉप्टर भेज सकते हो, भेजो। फटाफट उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा। इंडियन ऑफिसर बड़े थ्रिल थे कि यार हमारे फोर्स कमांडर के लिए, जो हम वैसे नहीं यूज करते, बट इट वाज सो वी हैड अ नाइस मीटिंग एंड ही थैंक्ड मी फॉर एवरीथिंग, फॉर बीइंग इम्पार्शियल एंड फॉर बीइंग एट इट। तो बेनी गैंट्स इज अ सेंट्रिस्ट लीडर, he is not a right wing leader.
70s 80s तक इनके लेबर लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स वर Likud. रूलिंग. No, Liquid came in, as you know, yeah, 96 they came. Liquid is right wing. उन्होंने Okay. फिर जितने भी इनके रिलीजियस ग्रुप्स हैं और बाकियों के साथ इनकी ना रिप्रेजेंटेटिव वो है 120 सीटें हैं और जो 60 या 61 सीटें ले जाए वो गवर्नमेंट बना सकता है. कोई भी गवर्नमेंट कभी भी मेजोरिटी में नहीं आई. जैसे अपने यहाँ एक दो बार आई हैं, वहाँ कभी नहीं आई. तो एक दूसरे से कोएलिशन करके ही गवर्नमेंट्स आती हैं. लेकिन इनका ये देखो नेशनल कैरेक्टर है. मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ, जब भी लड़ाई होती है तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट या वॉर टाइम यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है. इससे दोनों ऑपोजिशन लीडर्स को इनवाइट किया था, दूसरा किसी कारण नहीं आया, ये लिपिड. और ये जो गैंट्स आए, बेनी गैंट्स इज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड मैन. पिछली बार 60 वोटें थी, उन्होंने नई पार्टी शुरू की है ब्लू एंड व्हाइट. 60 वोटें थी तो बट वो दे प्लान टू शेयर द पावर. बट एनीवे वो चीजें पीछे चली गई. अब उन्होंने ये कहा कि बेनी गैंट्स से कि मैं आऊंगा, एक मेरा कंडीशन है. कहते क्या कहते 5 एक्स फौजी होने चाहिए काउंसिल में. देखो अगर आप लड़ाई पे जा रहे हो तो आपके एडवाइजर्स जो हैं वो मतलब उस चीज से वाकिफ होना चाहिए, लड़ाई कैसे लड़नी है, कैसे लड़ी गई आज तक. तो इन दोनों को मिला के 3 और फौजी उसमें, डिफेंस मिनिस्टर भी आ गए उसमें. और अभी ये लोग एक इन्होंने और काउंसिल में बंदा लिया है जो एम्बेसडर था यूएस में. एंड नेतन्याहू अपने आप यूएन के एम्बेसडर थे. तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे हैंडल करना है वो भी साथ में रखें. सो जब ऐसे लोग इकट्ठे बैठ के स्कीम बनाएंगे तो दे विल कम आउट विद वर्केबल सॉल्यूशंस, आई एम श्योर. Yeah, so that means, Joe, what are you saying is now the government politically they're going to be united. Yes. And they will not with take the any other kind bills. They will not handle any other bills, political bills, till the war is over. war is over. Yeah, and they're going to completely back the government, the military to do what it has to do. Absolutely, absolutely. So there is what we are going to see henceforth. Whatever has happened earlier. What you're going to see henceforth is a complete unity and politico-military unity on, in fact, I will use the word politico-military fusion on the part of Israel from henceforth. Absolutely. Okay. So that sets the stage for, any offensive into thing. Okay. Now, having said this, do you think they'll be able to go in for an offensive immediately? You leave the political part of it out. Will they be prepared to go in for an offensive immediately, or will they take another 3 to 4 days before they really start getting into an offensive? So it's a matter of choice. वैसे ये देश कमाल करता है जब क्राइसिस में होता है ना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके जब जितने ज्यूज को 6 मिलियन ज्यूज वर एलिमिनेटेड. सो इनमें वो जज्बा है और अगर जरूरत पड़ी तो ये कल भी तैयार होंगे. बट लाइक आई सेड कि ऑपरेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेट है. Okay. हो सकता है 3-4 दिन और ले ले. एंड इन दिस लास्ट 4-5 डेज इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपने साथ लेने की पूरी कोशिश की होगी, क्योंकि एवरीबडी इज राइट नाउ हैज सिंपैथी टुवर्ड्स देम. बट इतना ज्यादा लेट नहीं कर सकते कि फिर सिंपैथी थोड़ी उधर शिफ्ट हो जाएगी, उनकी पैलेस्टीनियंस की कैजुअलिटीज बढ़ जाएंगी. तो दे विल बी रेडी. They would have been ready even 2 days back, but they have to go in very deliberately. And intelligence, अभी वो जाग चुके हैं intelligence वाले. Right. No, you made a very important point, which I would like to highlight. You see, they're ready to go. On one hand, they can go. Yeah. On one hand, they want international cooperation and diplomacy so that everyone is with them. On the other hand, if they delay this, right, they lose international support because issues of humanitarian conditions and the effect of the siege and casualties. Already people have started talking of no fuel, people dying in hospitals and all that. Right, in the evening I was seeing some channels who are highlighting it. And what's interesting, these channels which are highlighting all these are from the Western press, not from the non-West.
Mainly Okay. EU. EU is EU. Yeah, you said it. It's come from DW channel, the German channel, of all things, right? Now, so that counter pressure of having to wait till they're completely diplomatically with the international community on their side, vis-a-vis this business of humanitarian rights, means that they might have to go in the next 24 to 48 hours. quite possible. Quite In, possible. yeah, I mean that's what it points. They might shift it back to 72 hours or so, because in any Because case there are not shift करेंगे तो लगेगा कि यार ये अभी तक मतलब क्यों नहीं किया? अभी तक शॉक में है. Which Yeah, okay. they recover Yeah, very fast. they recover very fast, देखो right? इन्होंने 67 और 73 में एक कंट्री के साथ सिचुएशन स्टेबलाइज करके फिर अपने फोर्स पूरी दूसरी साइड शिफ्ट की. मतलब दे ड्रू द बैलेंस सो फास्ट. ओके दे आर ऑन इंटीरियर लाइंस, उनकी रोड्स बड़ी अच्छी बनी है, अभी और भी अच्छी बना दी है. बट द पॉइंट इज, सबसे पहले जब मेरे को लेके गए ब्रीफिंग के लिए आईडीएफ बिल्डिंग के ऊपर, इट इज नेक्स्ट टू ए होटल, तो होटल के ऊपर एक रेस्टोरेंट है सबसे ऊपर, उसके ऊपर से मुझे दिखाया कि लुक एट द वेस्ट बैंक. मतलब आवर कंट्री इज सो थिन, if we don't protect ourselves, we'll be thrown into the sea. So this is the kind of preparation they do when the UN and envoys and all they come there. So that's the second important point which you made. No, the second important point which you made, which is I think everyone should understand, that this country has the capability of handling multiple fronts. Absolutely. After all, whether in the 67 war or even before that in their war of independence or in the Yom Kippur war, they handled the Egyptian front, they handled, Jordan was not that much of a threat, right? If I remember right, Syria, Lebanon, all three, right? They handled threats from all three sides, and they handled it very well. On इसमें तो कोई किसी को doubt नहीं, history इसके is vouches for that. So that means if they have to go in for a multiple front, one with Hamas and the second with Hezbollah, and if needed, even with Syria, with Assad, they can handle it. Yes, right? They can. Yes. They can. So that capability is something that they can handle. They might be hard stretched, but they can handle it. So they have the capability. क्योंकि sorry, the main enemy, जो main उनका दुश्मन है, वो asymmetric warfare कर रहे हैं. वहाँ ज्यादा strength की जरूरत नहीं है, वहाँ ज्यादा अकल की जरूरत है, ज्यादा दिमाग की जरूरत है. So yeah, I think this is the next point you made, that they will not lack for manpower. They have the technological capability. They have the national will. This is issues which before they get in, right? And they have the capability to handle multiple languages. या एक पॉइंट मैंने बताया नहीं, वो हर लड़ाई में है उनका, द इशू ऑफ सर्वाइवल, कि आज अगर हम हार गए तो कल हमको ये समुद्र में फेंक देंगे. ये इनके दिमाग में है. Right. So that means they always fight with their back to the wall, and right now I think they're back with their back to the wall. Very bad. Right? They're back with a back to the wall. So I mean, we should not have any doubts that Israel can handle the situation. Right? How they handle the situation is a secondary point. As a nation, I think what you have brought out is that Israel can handle the situation well. Okay. Yeah. Now let me go to the other side, because that's not there in our slide, but I will ask. What about Hamas? What about Hezbollah? What about their connections? Yeah, Hamas, where they punched above their weight. Okay. They didn't expect so many casualties, but they were very clear what is going to happen after this. It has happened to them so many times. 2014, 51 days, this engagement continued. I was there, very much there. And of course on the Golan Heights, but then we were in the country, and I was you're part of all the leaders. So they have lot of tenacity, और उनको भी मतलब देखो 17-16 साल से उनका ब्लॉकेट चल रहा है, जब से हमस पावर में आई 2007 में. 2005 में एज ए एक्सपेरिमेंट एरियल शरोन ने सेटलमेंट्स वहां से निकलवा दी थी under a lot of resistance from the settlers, और उसके बाद इलेक्शन हुई तो हमस came to power.
Fatah ने थोड़ी उनको Fatah tried to oppose him because Fatah was considered the successor of PLO on the Yeah, West Bank. They had some yeah, Al presence Fatah there. and उनको इन्होंने हरा के निकाल दिया. There was a lot of killing amongst them. 600-700 people died. The point is कि ये जो अभी जनरेशन है यंगस्टर्स की, ये सब बड़े हुए हैं इस खाना पीना और मेडिसिन की कमी हमेशा रही है पिछले 16 साल में. तो दे ऑल्सो फेल्ट कि दे वर पुश टू द वॉल, कि कोई पूरी दुनिया हमको भूल चुकी है और इसलिए दे वांटेड टू फ्लैग देयर इशू. तो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड. ऑल दे आर आस्किंग इज, आई मीन वेरी फनी दो, दे आर सेइंग कि अगर आप हमको वार्निंग नहीं करोगे आर्टिफाई करने से पहले, मतलब आर्टिफाई करो हमारे ऊपर, वार्निंग नहीं करोगे तो हम बेहेड करना शुरू कर देंगे लोगों को. Israel has been generally warning. First round is always warning. On Syrian side also. In those 3 years I found, whenever I wanted to fire on the Syrian side, first round was warning. So that आपकी आर्टी गन जहाँ से फायर आया, उसका जो क्रू है वो एकदम अलग अलग हो जाए और they destroy the gun. ये उनका modus operandi है. तो I think in their heart of heart, mentally they were prepared कि भाई इसकी repercussions तो होंगी. और उन्होंने मीडिया को भी बड़ा तैयार करके लाए थे अपने साथ. इतना मीडिया मैंने देखा अभी. आई थिंक इजराइल्स मीडिया वाज मच मोर इफेक्टिव. इस बार इनका मीडिया हैज दे स्कोर्ड few points over that. yeah. So it is going to be a tough nut to crack. Eventually, because of the tenacity and because they have to show to the world we can bounce back. Hamas के काफी उनके काफी रैंक्स दे विल बी एलिमिनेटेड. और सम स्टेज जब स्टेलमेट आ जाता है तो मे बी इंटरनेशनल कम्युनिटी विल बी एबल टू इंटरवेन. और उसमें इजिप्ट विल प्ले अ बिग रोल. अभी भी सोच रहे थे, भाई नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है सिविलियंस आप लोग निकल जाओ यहाँ से, हम लोग कुछ करने वाले हैं. वो कहाँ निकल जाए यार, रास्ते तो सब बंद हैं. they can't go anywhere. कहाँ जाएंगे वो? सी में जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे? तो they are trying to negotiate with Egypt कि आप उनको सेफ पैसेज दे दो. इजिप्ट अगर सेफ पैसेज देता है इसका मतलब वो उनकी सरदर्दी होगी. जितने भी 2.3 मिलियन में से जितने वहां जाते हैं उनको खिलाना पड़ेगा, उनको रखना पड़ेगा, उनको घर देने पड़ेंगे. तो ये भी सब चीजें चलेंगी इंटरनेशनल लेवल पे. इस समय वार्निंग के बाद क्या करते हैं ये लोग, जाते हैं यूएन स्कूल्स में. UNRWA रन्स यूएन स्कूल्स देयर. तो यूएन स्कूल में मार्क्ड है इनके पूरे टारगेट्स में, तो उनको अवॉइड करते हैं वो. तो दे लेट देम बी. बट अपने घर देखो 3,50,000 लोग, 3 लाख के करीब दे रेंडेड होमलेस ऑलरेडी, इंटरनली डिस्प्लेस हो गए. आने वाले दिनों में और होंगे. सो इट इज अ कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग. लेकिन अरे वो भी रहेंगे कुछ देर. इट विल बी अ टफ फाइट. So it's going to be a tough fight. It's not going to be a walkover, and there's going to be a lot of casualties both. Yeah, long haul. It's not a easy solution. Yeah. And my guess is it might not be a military solution. Ultimately, it has to be a political solution, right? And you might not get a clear-cut military. All wars eventually have a political. Firstly, we have the political reason to go to war, and it is only the political settlement which will. Yeah, I agree with you completely. War is just an instrument of polity, and that is where they fit in. Perfect. Okay, now let's look at a few other issues. What are the likely phases of this Israeli counteroffensive, and what are the options? We'll discuss both of these together. What I'll do is I'll put on this map, and you could generally go with this. And so there were a lot of tunnels coming out of गाजा से काफी टनल्स बना के इन्होंने, ये लोग आते रहे, बीच में 2-4 बार फायर करके चले गए. छोटे मोटे छुटपुट वो होते रहते थे. बट एज पर मेरे को ऐसे लग रहा है इजरायलीज को पता है कि इनका जो वॉर वेजिंग मटेरियल है, जितने भी इनके हथियार सब टनल्स में है. तो दे आर टैकलिंग देयर वन ऑफ द गुड पॉसिबिलिटीज फॉर देम टू, ताकि सिविलियंस की कैजुअलिटीज ना हो. वो कह रहे हैं जमीन पे एक लेयर है वो सिविलियंस का है और कुछ उसमें हमस के भी हैं, लेकिन एक नीचे लेयर है जमीन पे जो टनल्स हैं वो पूरा हमस का है. और वो बता रहे हैं सिविलियंस को आपने कहीं जाना भी है तो
नीचे मत जाओ टनल में. So I think the tunnels will be blocked first or they will be flushed out. So Okay. उसमें हमस का काफी क्लियरेंस हो जाएगी. But then Hamas will also come to the surface. Obviously they are not there to die. ठीक है, वो भी ऊपर जमीन पे आ जाएंगे. फिर वो थोड़ा फिर से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिचुएशन. तो फेजेस मैं कह रहा हूँ पहला फेज तो यही था पिछले 6-7 दिन में स्टेबलाइज द सिचुएशन और अपना बॉर्डर तक क्लियर करके जैसे आपने बताया कि वो उन्होंने अभी एक तरह से एक बफर जोन सी बनाई है. बट दैट इज मोर ऑन द इजरायली साइड. अब इसके बाद अगर लड़ाई में जब एज एंड व्हेन जब जीत जाते हैं तो शायद ये उनकी तरफ बनाएंगे. उससे और एरिया कम हो जाएगा, उससे और भीड़ हो जाएगी उधर. ठीक है. दूसरा फेज so they got to go from all around and start going into the center rather than going full scale in multiple prongs and all that. So no, exactly what जो आपने कहा है, ये अभी 10 या 12 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे पूरे गाजा में जहां पर हमस की ज्यादा प्रेजेंस है, नॉन प्रेजेंस है, एंड इट विल बी कंफर्म्ड बाय इनकी जो ह्यूमन इंट है जो अंदर है, और उनको पहले डिस्ट्रॉय करेंगे. So it is more of small team operations, more of small team surgical operations. Surgical operations. You're going in for that. उसमें collateral होगा तो international community, human rights association जितनी भी है वो आएंगी बीच में. इसलिए पहले उनको वीक करेंगे हमस की लीडरशिप को. साथ उनके रॉकेट्स वगैरह जहां पर डंप्ड है या क्या है, जहां इनको मालूम है, उनको वॉर वेजिंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय करेंगे. ठीक है. और तो दिस वुड बी आई थिंक द सेकंड फेज. एंड ओके, फेज 3 वुड बी उसके बाद once the resistance stops coming in that strength, then they would clear some pockets, selected pockets, like you said. सीधे नहीं जाएंगे सेंटर में, वो selected pockets क्लियर करके फिर ये लोग हो सकता है चौथे फेज में जाके एक बफर जोन बनाए अंदर. ठीक है. ओके. और इससे साथ स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे हर फेज के साथ टू गेट देयर कैप्टिव्स बैक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So what you're saying is you're looking at 3-4 operations going along simultaneously. One is special operations to free the hostages based on intelligence. The second is surgical operations to take out Hamas teams underground. The third will be to destroy the war-waging material of Hamas. And fourth is general bombardment from air or artillery or whatever it is, so that thing continues. Right? And simultaneously, this siege will also continue. After all, okay. And so it's going to be 16 साल से चल रही है, अभी थोड़ी ज्यादा टाइट होगी. दैट इज इट. जो टाइट हो जाएगा. At some time, if it goes for 2 weeks, 4 weeks, at sometimes they'll have to pump in food and water for the civilians. Yeah. So already people are talking. Yeah. Under international, already people are starting talking of international, safe lanes for humanitarian aid and. वो मैंने बताया आपको, the talks are going on. So yeah. So their aim would be to see and finish this whole thing of this thing, right? So this is the general mode of operations which will go on. Let's so they're talk not classical operations. No, they're not a classical operation, and it's also. I mean, I'm sure you'll agree with me. It will not be a clean bombardment to raise apartment blocks and all that. They might knock off a not building, but it can't be complete bombardment where there's mass casualties. भाई अभी तो काफी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है ऑलरेडी पिछले 5-6 दिन में. Already, okay. But sometimes the news channels also show old photographs of some areas. Oh yeah. But, forget that. Let's forget the information warfare which will go on. जितना भी information warfare will continue. But जितना भी कोशिश होनी चाहिए इनकी तरफ से, and knowing them well. बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था आज जोनाथन ने. He had worked with me. Jonathan Corners. He's the spokesperson. We may be angry, we may be upset, but we will still carry out operations like soldiers. So something like that, which is which shows a character. Yeah, and so these people are also going to go with a plan, right? There's no doubt about it. Right now, before I get into some kind of a final settlement
how do you visualize? I'll give you. We can discuss a couple of options. Yeah. Let me ask you, what are the extra-regional or regional issues in this area which will impact what's going to happen hereafter? Whether it's So Iran, yeah, I must take my mind back to the first day when I went to the Middle East. जब आप बाहर से okay, पढ़ के जाते हो मिडिल ईस्ट में ना, तो आपको लगता है यार ये प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, व्हाई कांट इट बी सॉल्व? इन दोनों को पैलेस्टीनियन को गाजा और वेस्ट बैंक दे दो और 50-50% लैंड कर लो और आपस में रहो. जितना आप ज्यादा वहां रहते हो और जितना आप ज्यादा उनके बारे में जानकारी करते हो, उतना यू आर लेस प्रिपेयर्ड टू प्रिडिक्ट कल क्या होने वाला है. मैं बता रहा हूँ, कल क्या होगा किसको मिडिल पता? ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं पता. अच्छा देखो, Yeah, जब भी पीस आने की कोशिश की गई है, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर अल सदात, he signed this Camp अपने David कैंप Accord. डेविड अकॉर्ड 1978-79 में वो पीस अकॉर्ड हो गया. और he was expelled. Egypt was expelled from Arab League for 3 years. Yeah, The headquarters yeah, was in Egypt, in Cairo, yeah, but they were expelled. So the headquarters also shifted. Then they came back. And later on, he was assassinated. yes, I must give credit to Prime Minister Rabin. He got, your Oslo Accords, and also with Jordan next year, they did this thing. He was killed by one of his own, yeah, because 96 he was getting very close to giving more concessions to PLO. So यहाँ कोई predict कर ही नहीं सकता कल. अगर जो कहता है वो मिडिल ईस्ट को नहीं जानता अच्छे से. It is such a complex place. But having said that, there are, since, let's go back to First World War and Second World War very briefly. It was these powers today who are the permanent members of the United Nations, Britain and France, who had the two protectorates. yes, Okay, so France left Syria and created a country which is Christian majority, if you may please, called Lebanon, and made Beirut like Paris of the East. Okay, before going. correct. And the Britishers left it in a mess. यार तुम आपस में बांट लेना 50-50, मैं जा रहा हूँ, ठीक है. They left this Palestine, then called Palestine, and some Palestine, Israeli yeah. settlements. They also messed up. But this was oil-rich region, and everybody's focus remained here. All colonies till date, you would agree with me, retain some presence in some form or the other, either commercial or other. So the amount of political awareness that I see in Jerusalem is nobody's business. Americans are there, they've got their own mission, peace mission or something going on. The UN has got 4 missions, 1 political and 3 others. Okay, so all kinds of people are working there to kind of see that peace is there. It comes to that. Till 1979, Iran was the best friend of Israel, thanks to the Americans. 1979 में उधर वो साइन होगी पीस ट्रीटी विद इजिप्ट. यहाँ पर शाह ऑफ ईरान को निकाल दिया उन्होंने. तो दे बिकम, मैं किसी भी जर्नल से बात करूं या पॉलिटिशियन से अगर इजराइल की बात करूं, डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर, he'll say our enemy number 1 is Israel. Israel's enemy number 1 is Iran. Enemy number 2 is Iran. Enemy number 3 is Iran. Then comes Hezbollah and all. So okay. they were very, very worried about Iran's getting nuclear, Iran trying to do this. And Iran has been supporting Hezbollah in the long war in the north. They supported the Syrian war. Of course, overspill was controlled by Syrians at the behest of the UN. We were there. So, but whenever it happened, they punished them. So, Iran is always involved. Turkey used to be a friend of Israel. Then something happened that some soldiers were killed, and so they also, Turkey is at the cusp. They wanted to be part of
यूरोपियन यूनियन उनको वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया, अब वो नेटो में है, सोच रहे हैं रहे नेटो में ना रहे, बट देन टर्की इज क्लोजर टू रशिया, रशिया इज क्लोजर टू ईरान, so there is kind of a little bit of best part, or the worst part is that this land which is initially inhabited by Arabs, इनका फ्यूचर डिसाइड करने वाले 2-3 नॉन अरब्स हैं, एक सऊदी अरेबिया को छोड़ के, and Egypt is quite weak. There is Israel, there is Iran, and there is Turkey. So none of them are Arabs. It's a very precarious situation. Okay. And there is a Shia crescent, as you know, from Iran through Iraq into Syria, and that goes to Hezbollah. And it's very interesting. Shia Sunni आपस में बेशक जितना लड़ेंगे, but Hamas is a Sunni party. Sunni, yes. And they're supported by Shia Iran and Shia Hezbollah in the north. Hezbollah, so when it comes to interest of the country, that is number one. तो ये पावर्स है. अभी देखो इम्पोर्टेंस जो मिडिल ईस्ट का जो तेल है उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम होती आ रही है. शेल गैस आ गई, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, पीपल आर ट्रांसफरिंग, आई मीन the renewable energy आ गई है in a big way. So अभी इम्पोर्टेंस इनकी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी. That's why UAE, Saudi Arabia, they place themselves very well. उन्होंने अपना tertiary sector को बढ़ाया अच्छे से. They're doing banking, they're doing business with the rest of the world, and they're forward looking. 12 साल पहले मैंने BBC पे इसकी इंटरव्यू देखी थी. शेख की कहते I don't mind doing business with Israel once they solve the problem with Palestinians, that kind of thing. So they were open to any changes, and now they're already into a kind of a understanding. So extra regional powers and regional powers are totally involved in it. But most balance is Jordan. The king of Jordan maintains a balance, and they do intelligence sharing with Israel. Jordanian officers come to Israel to do courses, by the way. I've been a guest speaker there. So one of the places. So, and Egypt, they have a good understanding, because besides that 20 years treaty and all that, US had given 22 billion to Egypt to modernize their army, which is spread over 20 years. So that kind of, these two, they don't have to worry. But the point is, Egyptians will come under pressure. There are in Sinai, which was traded, land for peace. That's why Sinai was given back to Egypt, and after the Accords. So there are some Bedouin tribes are there, and some of them are dealing into smuggling and all, and they also carried out a lot of terrorist attacks in the last few. In between ISIS, it was a herd. ISIS also had some presence there. So maybe rockets वगैरह इधर से आते होंगे उनके वहाँ से, So Egypt is going to be under a lot of pressure to absorb some refugees, as also this thing, and it's the very, very, very trying times and very uncertain times in entry. So I mean, the net जो आपने बताया है, you're going to have a refugee problem, you're going to have a humanitarian problem, and it's not going to be a clean military affair. It's going to be a long drawn affair where we're going to see casualties from both sides. ये पहले की तरह नहीं है सिर्फ other side के casualties हो, and not Israelis also going to have पहले casualties. Israelis का जो ratio होता था उनकी casualty का, it was 1:5, 1:6 होता था. अगर एक इजरायली मरता था तो 5 अरब मरते. इस बार तो पहले से उन्होंने the casualty is already 4 figures against them. The casualty, the ratio is already against them, adversely against them. In the beginning, 2 wars के बराबर casualties already हो चुकी हैं. Already हो गए. और योम किपुर के से आधी casualties हो चुकी हैं पहले दिन. So you can't afford. You can't. Israel can't afford this. Back to your point, more political solutions have to be found needed. out. So I read somewhere, which I want to bounce off you, whether if it's feasible also. And the suggestion which came up was, fine, you do whatever you want to do against Hamas, and when the time comes, how about putting a multinational force into Gaza? And that multinational force has to come probably from Egypt, Saudi Arabia, Jordan, and all these other countries. It can't come. Okay, so that's out of the window. No.
No, what I'm saying, it can't come from, like you rightly said, from Egypt and Saudi Arabia. It will not come. But there is, what you said is right. There is already a force like that in Sinai. That can be beefed Okay, up. It is okay, American led, but they can be given no, blue berets and or either all build up that. on that. Because, Or we have got a lot of observers. There is one mission which only provides observers. That's a funny arrangement. It's the oldest mission, UNSO. They are in Jerusalem. okay, So they give about 70 observers to my mission on Golan Heights and about 60 to, to UNIFIL in Lebanon. So they can initially give some, all missions have been started by them, the mother of all missions. So some okay. kind of a observing force has to be there. You're right. That can be. So that means some kind of a peacekeeping force, whether it's a regional force which the UN makes, or from friendly countries or which are acceptable countries, acceptable Acceptable. nationalities, Yeah. right? Mutually acceptable to Palestine and Israel has to be the ultimate solution. Yeah. So, I mean, that means the UN has to come into play again in a big way. I think it is on the cards. It is on the cards. Yeah. Right. So I think this whole thing today is what the interaction we've had. You actually panned out what's in the future. It's going to be a messy future, Yeah. and if you take the Ukraine war into consideration and what's happening here into consideration and what's happening in the South China Sea also into Yeah. consideration, we're going to see Yes. a messy future for the next 1 to 2 years, and this is Absolutely. not going to be wished away. And the major point which you brought out, that Israel won't have a walkover just by firepower. No, it's not a It's going to walkover. be, it's not a It's not a walkover, cakewalk. and this, it's not a cakewalk by any stretch of Certainly not. imagination. Certainly not. Certainly Sir, not. you Right? get bogged down. You've seen Grozny. You have seen Ukraine Yeah, very yeah. recently. बाकमुट में देखिए आप क्या हुआ. Stalingrad, yeah. Ultimately, Give an example. yeah. The might. So, and right. So ultimately, and we also have looking at a solution, a situation where the Hamas fighters, whether we like it or not, are pretty experienced by now and Yeah. battle hardened. And Battle Israel, hardened and उनमें जुनून है, जुनून. Junoon hai, and they are fighting on their terrain, and Israel is not. And Yeah. Israel has got a lot of conscripts. आज जैसे आपने बोला बच्चे हैं 18 साल और 20 साल के तक, तो क्या उनके पास वो काबिलियत होगा टू हैंडल हमस और जुनून. एंड जुनून जो है फौज में ना, वो बैटलफील्ड में जैसे हमें पता है, हम सीए लड़ चुके हैं, राइट, किसी और जुनून के साथ. So we know what the kind of future Yeah. there is. Okay, so it's going to be a thing. So what we'll do, Ike, is we'll take some questions, and maybe after 10-15 days we'll come back and review the situation. Yeah, sure. By then, Yeah, lot of lot people of would have events would have down the this Jordan River. Jordan River, and then we'll see. And maybe instead of going into the Dead Sea, some might go into the Mediterranean also. Let us see what happens. So I'll take a few questions, and then we'll call it a day, because I know you have to go to the Coastmates get together, which I'm missing. Incidentally, Right. viewers, मैं कोवलम में बैठा हूँ, मैं आपको दिखा नहीं सकता, अभी अंधेरा हो गया. पीछे बहुत ही अच्छा व्यू है सी का, and हम लोग सब बैचमेट हैं because he's got responsibilities at home. General Shankar has not been able to make it, but all these batchmates are waiting down for the breakup party. But Yeah, I'll like to take 3-4 questions, and then you could we will do that. Okay. So the first question is, it's about extra-regional powers. Karthik says, how many friends the US can handle with Ukraine versus Russia, Israel versus Hamas already being hot? What happens if China opens another front in Taiwan? तो पहली बात तो यूएस कहीं सीधा लड़ाई नहीं कर रहा है, वो करवा रहा है, ठीक है, मतलब वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दैट. तो दे आर मोर ऑफ ए डेटरेंस एंड ये सब कुछ है उनका. लीबिया में भी इट वाज द कोलिशन फोर्सेस हु वेंट इन एंड नॉट इट वाजंट यूएस. तो अभी जो यूक्रेन इज नो गेटिंग ऑन द बैक बर्नर, एंड ये नहीं होता कि कितने अफोर्ड कर सकता है यूएस, बट ये देखना है कि कहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है टू गेट बोथ साइड्स टू द नेगोशिएशन टेबल. और मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है बिकॉज इट्स अ वेरी वोलेटाइल
area. तो इसलिए मैं Yeah. मेरे ख्याल से US will be able to handle this. Will be able to handle. मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूँ कि वेरी इंटरेस्टिंग कि सब लोग सोचते हैं कि मतलब जब नेतन्याहू के ने 2 टेन्योर किए थे 5-5 साल के, वो देवर पैरेलल टेन्योर्स विद ओबामा, और इनकी आपस में नहीं बनती थी बिल्कुल। एंड ये ओबामा के डिप्टी थे बाइडेन, तो इनकी आपस में नहीं बनी दोनों पार्टियों की। लेकिन व्हेन इट केम टू नेशनल इंटरेस्ट और सेविंग इजराइल, होल हार्टेडली इन्होंने सपोर्ट किया। बाइडेन की आप अभी स्टेटमेंट देखो, दे आर नॉट ब्रिंगिंग इन पर्सनल थिंग्स एट ऑल। और 4 जुलाई को एक बार अमेरिकन एम्बेसडर के घर वी वर इनवाइटेड, वहां पर द प्रेसिडेंट स्पोक, नेतन्याहू स्पोक, एंड द एम्बेसडर स्पोक, एंड ऑल थ्री told the international community, all diplomats who were there, in no uncertain term, that US is behind Israel strongly. Yeah, So on that we shouldn't have any doubt. And one more thing I would like to tell Karthik is that China, if you actually seen what's happening in South China Sea, at this point of time, China has more problems with Philippines than with Taiwan, right? In this Thomas Shoal and this Scarborough Shoal, they're kitpit ho raha hai. So anything to do with Taiwan will spill over to Philippines. Whether China can afford it is a bigger question. One. Number two, with the Middle East going up, the way things are going up in Middle East, that Iran and Saudi deal is tenuous at this point of time. If that goes fat, if something happens there, all China's diplomatic gains in this area will go down. So I don't think that China will be in a hurry to open up a new front. Just to add to what you said, I fully agree with you. China is on the cusp of becoming a superpower. A superpower has to behave responsibly. China के internal problems भी हैं अभी काफी, वो आपसे ज्यादा कौन जानता है, you are a China expert. तो मेरा ख्याल नहीं है चाइना, ये तो पोस्टरिंग होती रहेगी। मुझे लगता नहीं है चाइना ताइवान के अंदर जल्दी घुसने वाला है, जल्दी से नहीं जाएगा, और जब जाएगा तो फिर कोई उसको रोक भी नहीं पाएगा। तब वो इस तरीके से जाएगा, जरूरी नहीं है मिलिट्री एक्शन हो जैसे आप कह रहे हो, इट कैन बी एनी अदर पॉलिटिकल एक्शन। Yeah, and at this point of time, China doesn't have the political, heft to go into Taiwan. So they have to create that political right? Okay. Next, KD super sticker, thank you. And Ravi Malhotra, can Israel and US shift civilian population on sea? हाँ, वो कर सकते हैं अगर इजराइल अलाउ करे तो, बट वो करेगा अगर, मतलब may not be again USA directly, but civil population Gaza से आए हो, you saying Gaza से? Yeah. That's what he's talking of denuding the civil population, displacing civil population, from Gaza, evacuating civilians. But immigrants are not being accepted by Europe anymore. You see what happens. Boat diplomacy and अभी they're sending the boats back everywhere. तो मुश्किल है, but कितने लोग निकाल सकते हैं, कितने 2.3 million is. It's not easy. 23 lakhs is not easy to. Yeah, unimaginable. Who'll accept them? The people who are in today, refugees, Palestinian refugees in other Arab countries, are also being pressurized to go back. They are not being accepted in those places. So how do you think, where will they be sent, these people? And why will USA try to handle 20 million? दूसरा उसमें खतरा है कि हमस के लोग innocent civilians के साथ भी निकल सकते हैं, मुझे रिस्क शायद ना लेना चाहिए. No, yeah. So then I don't think this will come through, but that's a point which we can think. Thank you, Amar, for this super thing. And Sridhar joined us as a member. I'm glad. Thank you. So I'll take 2 more questions. Then I'll let you go. Okay. Right. Okay. There's something about India. Sir, the Indian government has started Operation Vijay. Is the situation going to be worse? नहीं, देखो, Indian government is quite clear. इजराइल में ना, जब मैं पिछली बार गाजा ऑपरेशन चल रहा, तेल अवीव में लोग बीच पे घूम रहे थे आराम से, मतलब वन साइड इज बिजी इन द वॉर, तो वो बंदे दे गॉट यूज्ड टू इट, दे लिव फॉर द डे.
स्पेशली जो आईटी वगैरह वाले हैं, जहाँ जहाँ हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने 18,000 लोग हैं हमारे उधर, उन्होंने उनको ऑप्शन दी है कि आप अगर आना चाहो तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्टर्ड प्लेन स्टार्ट किए हैं, एंड उसमें मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम होगा. देयर आर मोर वेज ऑफ गेटिंग देम बैक. एक उनको जॉर्डन के थ्रू हम अमान से भी पिकअप करा सकते हैं. दे कैन गो बाय रोड टू जॉर्डन. एंड बाकी टेल अवीव एयरपोर्ट अभी खुला है, बाकी लोग भी बाकी No, I countries don't भी think that साउथ should कोरिया. be a problem. I don't think that's We a call it issue. Operation Ajay, but we are not likely to be getting involved in the मतलब इनको ये पता है in the war. Yeah, yeah. They will not. Yeah, it's Yeah, more they are. evacuation and nothing more, right? Yeah. Okay. Was it unfair on Palestinians to be separated into two separate geographical entities, into West Bank and Gaza, just like East and West Pakistan? ये क्वेश्चन कहाँ से आया? Anyway, No, you look, it's just a simile. That's why I've taken it. yeah, I don't think no, it's you okay. and I are. See, history has been very unkind to many nations. I'll give you an example of Kurds. Now, Kurds are 25, no, 25 when I did Staffel, and now they must be 40 million. They have been divided in Syria, they are there in Turkey, okay, they are there in Iran, they are there in Iraq. उनको कोई nationality नहीं मिली आज तक. Very unfair on them also. They were promised after Ottoman Empire finished in First World War. So जब ये बने हैं, जब देश बनते हैं, डिफॉल्ट से बनते हैं, तब ये देखा गया होगा कि जहां जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है उसको वो पोर्शन दे दो. और क्योंकि पंजाब का डिवीजन हुआ, इंडिया का जो डिवीजन हुआ है वो पंजाब और बंगाल का डिवीजन हुआ है, बाय द वे. सो बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू, वन वेंट एज ईस्ट पाकिस्तान, अदर रिमेन्ड विद अस. सो वेस्ट. Oh, yeah, I think his. It is west of River Jordan. तो ये जो हुआ है, it is unfortunate and unfair, but they tried to make 50-50%. That was a kind of a rough map which UN had agreed to, but Britishers did not like India Pakistan. इसको भी वो unfinished task छोड़ के चले गए, और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 15 मई को इंडिपेंडेंस इजरायलीज ने. It's something similar. So this is a overflow of history which will continue well into the future. So let's not this thing. Okay, there's a guy who says, General Shankar, you did not take my question yesterday, so I will ask again. Right. But then it's a thing which it's in our context. Can paragliders like used by Hamas be used by infiltrators to enter India across the LOC? Your take or my take? No, you take. Go ahead. So, you take. I can also take. I've commanded a company, a battalion, and a brigade on the LOC. तो जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, LC एक्चुअली, पाकिस्तान LC कहते हैं और चाइना के साथ LOC कहते हैं. तो या LAC प्लेसेस. तो वहां पर हमारी प्रेजेंस काफी है दोनों साइड की. मतलब वहां पर इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल कई जगह आईबॉल टू आईबॉल है, कई जगह 18-18, 20-20, 24-24 पोस्ट है एक बटालियन के. हम लोग वहां लगे हुए हैं ऑन इजरायली गाजा बॉर्डर. जो गाजा साइड में तो उनकी सिर्फ पुलिस फोर्स वगैरह थी जो रिकग्नाइज है, और इजरायलीज ने ज्यादा अपने टेक्नोलॉजी के साथ करके, बट इनके कंट्रोल रूम बहुत अच्छे हैं. वो मैंने बताया 18 से 21 साल के जो बच्चे हैं वो दे मैन द कंट्रोल रूम. ईच इंच ऑफ ग्राउंड इज जनरली सीन, यू नो, कि कहाँ उसमें वो तो नहीं हो रहा. 18 साल की एक लड़की आर्टी फायर ला सकती है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बाद में वो आंसर करेगी, बट पहले फायर आएगा. तो ये उनकी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस थी. इस बार वो थोड़े सोते. एंड हमारे इधर अगर होगा तो जैसे ड्रोन्स वगैरह भी चलते हैं, एक आधा निकल जाएगा, 8-10 दे विल बी शॉट डाउन. So that is the success rate. Look, there's a difference between, you know, the LOC and the LC in our context and their context. Firstly, paragliders in our context across the LC, it's all mountainous terrain. So in mountainous terrains, these have problems. Jungle, वगैरह हैं. They have very limited places where they can attack. And you know, in our area across, in our side of the LC,
they don't have targets. They can't come and do mass killing. If they do mass killing, the population will go against them. If population goes against them, they'll not survive. And so they will do on this kind of paragliding thing only for specific purposes, right? Only for surgical operations, for which we have to be vigilant. Let's be clear. This is an option for vertical envelopment, which should not be ruled out hereafter. That's the major thing. Yeah. And I think वो ज़्यादा paragliders थोड़े सिर्फ दिखाने के लिए थे कि we are coming from all three sides, but the numbers they were quite limited. Not much. It is more psychological in nature. More psychological. Okay. Yeah, sir. Can they afford? This is about Israel. Can they afford in terms of manpower attrition for a long grinding battle with Hamas in an urban warfare? Your take on possible multiple fronts and learning for us regarding a leaner army. For us. हम लोग तो अपना मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो भी आई थिंक हमने कवर किया है आपका क्वेश्चन. Yeah, we covered, but ऐसा है कि the answer is yes. Answer is yes. उनके 3,60,000 रिजर्विस्ट भी आ चुके हैं. कोई इतना बड़ी फ्रंटेज नहीं है, 40 किलोमीटर ही है. वो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस रख लेंगे उसके साथ, सीरिया के साथ, और ऊपर नॉर्थ वो जो ऐसे फिगर ऑफ 7 बनती है विद लेबनान, और यहाँ पर अपना एफर्ट डालेंगे. प्रॉब्लम ये है कि आप अपना पूरी स्ट्रेंथ यूज ही नहीं कर सकते. तो प्रोलॉन्ग्ड उसमें ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ओपिनियन विल बी द मेन थिंग दैट विल कम अक्रॉस. लेकिन casualty wise, propensity to take casualties is much lower on Israeli side than the Arab side. That was my reading. Yeah, I take that. Okay, sir, if wars are being imposed to countries and the moment they retaliate, human rights come in between every time, how will countries survive? That is a condition which we have to deal with hereafter in war. The advent of non-state actors, terrorists, militant activities, all these have humanized the battlefield. The human element and the asymmetry in the battlefield has come up. And this is a new state of the battle which we have to live with. Right? Gone are the days when, you will have clean lines between two armies. It's gone. And technology has complicated all this. So we are living in a new normal. If you look at the Ukraine-Russia war, you already see a lot of mercenaries being used. So that's a different phase of war. Here there are no mercenaries. Here there are terrorist groups and militant groups, right? And these militant groups have state support. So you have to understand that gone are the days of the old war. You have to deal with the new system. And like they say in war, everything is fair and love and war. Sab jaiz hai. Right. Okay. Right. Let me see if there's any other question. If you're getting late, you carry on. I'll handle the question. Okay. Thank you very much. और yeah, मैं देख तो नहीं पाया व्यूअर्स को, बट बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने अच्छे से हमें सुना, और ये क्वेश्चन भी बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस थे. दे वर वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस. और बाकी के क्वेश्चन मैं अपने कोर्समेट के ऊपर बोझ डाल के don't worry, thanks. Thanks a lot. My personal thanks to you, Ike, for having come here and enlightened us for all this. And please convey my best wishes to the entire course. और ये वीडियो सबको दिखाइए कि हमारे कोर्समेट्स को, right? And let them also know. वो हिंदी में कहते हैं कि क्या सारी खुदाई एक तरफ और गुरु का भाई एक तरफ. यहाँ पर कोर्समेट से ऊपर कोई नहीं होता है. कोई नहीं होता. Okay, thank you. Okay. Thank you very much. Right, bye. Thanks a lot, and wish you all the best. Bye. Right? Yeah. Take care. Okay, let me take a few more questions before I wind up. क्या हिंदुस्तान के ऊपर इस तरह का हमला हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो मजहबी कारण के चलते दुश्मनों का साथ देंगे. हम इस संभावित हमले के लिए कितना तैयार हैं? वीएस साहब, मैं बताना चाहता हूं,
हमारे यहाँ भी ऐसे हमले हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ हमला हुआ नहीं है। हमारे यहाँ 26/11 हुआ था, हमारे यहाँ उरी हुआ था, हमारा पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था। पार्लियामेंट जो है ना, दिल्ली जो अंदर है, ठीक। तो इस तरीके के अटैक हो सकते हैं, इसका आकार अलग हो सकता है, इसका द क्वांटम ऑफ ट्रूप्स व्हिच आर यूज्ड इज डिफरेंट। और ये भी है कि फॉरेन टेररिस्ट और पाकिस्तान से जो प्रॉक्सी वॉर के तत्व आके हमारे कैंटोनमेंट्स में हमारे बच्चों को और लेडीज को मारा है, ये नया नहीं है। कालूचक में हुआ है, संजुआन में हुआ है और बहुत जगह हुआ है, मैं अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये तो प्रॉक्सी वॉर, हम इसके साथ वाकिफ है। फर्क ये है कि क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और हमारा देश इतना बिखरा हुआ है, और वैसे पाकिस्तान भी फैला हुआ है, ये गाजा टाइप का सिचुएशन नहीं है। यू कैन नॉट पुट कि गाजा टाइप का सिचुएशन यहाँ हो सकता है। पर जो मूल कारण, मूल आधार, द बेसिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज देयर। सो इट इज नॉट एज इफ कि हम तैयार नहीं है, और हम तैयार हैं, राइट। और हर सेटबैक के बाद हम और तैयार होते गए। आप देखिए, बालाकोट के बाद, और इनफैक्ट हमने जो व्हाट वी डिड, ओके, हैज देयर बीन एनी मेजर अटैक आफ्टर दैट? नो। पाकिस्तान ने आ गया कि पीस चाहिए हमें, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सतर्क ना रहे। अगर आप देखेंगे तो हमास ने ये क्यों किया? क्योंकि उसको लिए कोने के लिए और कुछ बचा ही नहीं। They were at against the wall. They didn't have anything to lose, so they did this. उसी तरीके से अगर पाकिस्तान वो कगार पे पहुंच गया कि दे हैव इकोनॉमिकली नथिंग टू लूज, दे हैव नथिंग टू लूज फॉर एनीथिंग एल्स, एंड दे हैव इंटरनल प्रॉब्लम्स, they might undertake such an adventure, and we have to be prepared for it, and we have to be prepared to be surprised, and we have to be prepared to be deceived. And हमारा हिस्ट्री रहा है कि we got surprised in Eastern Ladakh, we got surprised in Kargil, we got surprised in Mandyala in 71 operations, right? We are a trusting lot. We also have to get our intelligence act together. The day we get our intelligence act together, we'll be able to handle it. Otherwise also, we have the capability to handle it much better. Let me tell you, much better than the Israelis are handling it. अगर आप देखेंगे तो हमने चाइना को भी हैंडल किया है और पाकिस्तान को भी सही तरीके से हैंडल किया है। पर जिस तरीके से ये पूरा लड़ाई का आकार बदल रहा है, तो इट्स अ न्यू थिंग, एवरी डे इज अ न्यू डे, जैसे जनरल सिंघा ने बताया है, राइट? Yeah, what lot of good comments, lot of this thing I can't go through. I'll go through in some few good questions. Yeah, this is a very good question, Venkat Konduru. How does one differentiate between Hamas and Palestinians? You can't. You just can't. It's very difficult. It is a situation which is worse than what we have faced in the worst times in Kashmir. So that is why Israel has a tough hand. It's not easy, right? Okay. What are your thoughts about Israeli bombing airports in Syria and Lebanon just before Iran's foreign ministers visit there? जैसे मैंने अभी बताया है, ऑलरेडी कुछ खिटपिट शुरू हो गया लेबनान के साथ और सीरिया के साथ, जो जनरल सिंघा ने बताया है। तो आगे क्या होगा देखी जाएगी। ये तो हालात के ऊपर है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हाउ द हैंड्स गेट अनफोल्डेड एंड हु वांट्स टू प्ले व्हिच हैंड, right? If we'll have to watch and see. That's why I said after about 10-15 days I'll get General Singha back, and okay. Okay, अगर आप हिंदी में बात करें तो मुझ जैसे आदमी को भी आपके शानदार विश्लेषण का पूरा लाभ मिल जाएगा। अतुल पंत जी, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। इसीलिए आधा हिंदी आधा इंग्लिश में बात करता रहता हूँ। लोग बोलते हैं कि आपको हिंदी नहीं आता फिर भी आप बात करते हो, आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो दो भाषा में, आपका फ्लो ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर मैं कोशिश करता हूँ आपकी जैसे लोगों के लिए, ताकि आपको भी समझ में आए जो हम बात कर रहे हैं, आप
इंग्लिश में भी कुछ लोग आते हैं जिनको बिल्कुल हिंदी भी नहीं पता, तो इसीलिए मैं ये इस तरीके से बात कर रहा हूँ। ये हमारा भाषा तो एक माध्यम है बताने के लिए। अगर आप मोटा मोटा तौर पे समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यही हम कर सकते हैं। लोग बोलते हैं मेरे को कि एक दिन हिंदी में बात कीजिए, एक दिन अंग्रेजी में बात कीजिए, ये मेरी बस की बात नहीं है। ये आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, मैं ये एक शौक की तरह कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव एक्चुअली लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच आई डू फॉर द नेशन, राइट, इन आईआईटी। जब मेरा फ्री टाइम है, क्योंकि आई डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन चाइना, आई डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन जियोपॉलिटिक्स, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यही मेरी इतना ही मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आप जितने आए, जितने सुन सके, जितना मेरे से हो सकता है मैं ये सबटाइटल्स में डाल देता हूँ। सो दैट इज हाउ इट इज। ये मेरा, दैट्स माय लिमिटेशन, आई कांट डू मोर, राइट। Why does India have to stand with Palestine? Historically, it has been proven that Palestinians don't like India due to religious preference. Israel has been our friend always, yet we stand with Palestine. ऐसी बात नहीं है कि Palestine was not our friend. You must understand, we had a lot of equations with Palestine. We have a huge lot of equations with the Arab world. Okay, but things have changed. आजकल के दिन में हमने चेंज कर दिया है. We need to have a balance. आप जो अभी बोल रहे हो कि आईमेक चलाना है, आईमेक इज थ्रू मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अरब, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, ये अरब वर्ल्ड के साथ अगर आपको तालमेल सही नहीं होगा तो यू विल नॉट, आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। अगर अरब वर्ल्ड के साथ आपका तालमेल सही नहीं रहेगा तो आप पाकिस्तान को कैसे सॉर्ट आउट करोगे? आप अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो हमारे पास जो इतने मुस्लिम आबादी है उनके साथ क्या हमारा रिश्ता होगा खुद का इंटरनली? तो ये बहुत पहलू है। वी हैव टू सी वी आर अ मल्टी प्लूरल एंड मल्टी कल्चरल एंड मल्टी लिंगुअल एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी। ये कभी हमें भूल नहीं सकते। वी आर अ हिंदू मेजोरिटी, और हिंदुओं के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बाकियों को हमें साथ चलो। और जब एज अ देश, एक एज अ रीजनल पावर, व्हेन यू हैव टू डील विद द कंट्रीज, यू हैव टू बिहेव लाइक अ रीजनल पावर। यू कैन नॉट जस्ट बी अगेंस्ट एवरीवन और फॉर एवरीवन। और हमारा ये जो प्रथा है वो प्रथा है नॉन अलाइनमेंट, ऑटोनॉमी, राइट। एंड अगर हम एक रीजनल पावर बन के आ रहे हैं जो ट्रस्टवर्दी पावर है, पीपल हैव टू ट्रस्ट अस, सो वी हैव टू नेवर ब्रेक ब्रिजेस विद एनीवन, राइट। एंड वी हैव डन इट सक्सेसफुली। हमारे पास साथ ये जो throughout our independence, from independence to now, we've had this thing. So we should not see everyone in black and white light, right? Except probably Pakistan, jiske saath we don't have a choice, and China, right? Even in China, let me put it, if our border problems get solved, we don't have a problem with China at all. Throughout civilization, we are two civilizational nations. So there are everything, you have to be careful in how you think, and you have to have a 360-degree view in geopolitics, right? And at the end of the day, national interest matter. हमारा खुद का देश का इंटरेस्ट ऊपर है सबसे। ओके, I don't want to talk about politics, so please do not ask me anything about politics. We will talk about geopolitics, we will talk about our national issues, I will talk about our patriotic issues. We will not talk about BJP, we will not talk about Congress. We will not talk about AAP, we will not talk of Aam Aadmi Party, we will not talk of Trinamool, or we will not talk of DMK. This is just out of the equation in gunner shot. Okay, right. I'll only answer questions about that. Other questions related to general budget, preparation of the army and all, we'll do it in open hour. Okay. Yeah. Israel uses conscript. Anything we can learn from them with respect to Agniveers? You please have a look at my video day before yesterday. And whatever I have said in my video has been quoted by News9, and they have put out a article. I am very clear. We have to modify our Agniveer scheme. Why we have to modify everything?
You can have a look at it. You can have a look at that video. Please go to Gunner Shot. Gunner Shot में जाके अग्निपथ टाइप कीजिए in the search box. आपको 15-20 आर्टिकल मिलेंगे जो मैंने लिखा, अग्निवीर का सिस्टम जो क्यों हमारे लिए ठीक नहीं है, why that अग्निवीर system is flawed, and what are the modifications to be done. I have very clear and logical views about it, and it's time the government starts heeding based on the experience of the Ukraine war and this war. Okay. Okay, do you see this conflict snowballing into something major, considering the Islamic nations surrounding Israel are stepping into the war through proxies and overtly condemning Israel? This is the nature of Middle East wars. None of these Middle East nations will get into a direct conflict. They will only do asymmetry through these people. And Kaskaske, Iran, Qatar, टर्की विल छुपा रुस्तम टाइप काम करेगा, और सीरिया विल get in, and Lebanon. These are the countries which will be at the forefront, which will support Hamas. Egypt, Saudi Arabia, and UAE or Jordan will play cat on the wall game. Okay, right. कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ये नहीं है, या I right. I really don't see great questions on this. Okay, the rest are all questions. We'll keep taking questions because day after tomorrow, in fact, on Sunday also, I'll be discussing with General Hasnain. I'm not going to take any more questions now. On Sunday also, we're going to be discussing with General Hasnain on India-specific issues of this this Israel Hamas war. So we'll take it on then, because this is going to go on and on and on, right? And last thing, let me request you one, all of you who are listening. Look, I take a dispassionate views of everything. I am not for any party. I am completely secular. Indian Army is completely secular. If you feel secularism is bad, keep it for yourself. That's your way of looking at it. Don't express it here, right? And don't be part of my channel either. I couldn't care a damn about it. In the army, we are a secular force. We believe in India being secular, right? And I have no affiliation with any party. I have only affiliation with one thing called India, Bharat. आप इंडिया बोलो, भारत बोलो, मेरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता. I am not for any particular state. I am not for any language. I am not anything. आप इंडियन रूपी को लीजिए, जितना उसमें लैंग्वेजेस हैं, सारे लैंग्वेजेस मेरे लैंग्वेजेस हैं, right? So keep these in mind before you comment and ask questions, right? Keep it to a level which is good. I find many of you come out with very highly intellectual questions, which I like. Which are challenging questions. That is more to be discussed than talking of BJP and Congress and things like that, right? Right. With this, I'll leave you. Tomorrow I'm not here because we have a major conference in IIT. Day after, we're going to talk of Maldives for a change. Because Maldives में जो सत्ता बदला हुआ है, and that has problems for us, which we have not discussed so far. I'm going to discuss about Maldives with Major General Harsh Kakkad. And on Sunday, I'll get back with General Hasnain on the India-specific issues of this war. Thank you, good evening, and good night. And lastly, Jai Hind.